Assalamu alaikum everyone. Again, I'm back with a new video and today's topic is speech. So, in this video, we will be discussing what speech is, which things or which body parts help us to produce sounds. So basically, later on, after a few seconds, you will be having two pictures, and from those two pictures, you have to first of all guess about the topic, what the topic is about. अभी की थोड़ी सी डेफिनेशन तो नहीं, अभी की थोड़ी सी जो मैंने बातचीत की, आपको कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा कि स्पीच क्या है. बट लेट्स सी, अभी भी आपका टेस्ट लेना ज़रूरी है. सो हेयर इज़ वन पिक्चर. Look at the picture carefully. We can see that one man is standing in front of an audience, and there is a laptop in front of him. He is delivering some points or certain topic is there under discussion, and he is also having a mic in front of it. It means कि ये लोगों से बात कर रहा है, ये उनसे कुछ ख़यालात का, कुछ नज़रियात का, कुछ चीज़ों का इज़हार कर रहा है और उनसे कम्युनिकेट कर रहा है, उनको कोई बात, कोई पैगाम उनको पहुंचाना चाह रहा है. So this is the normal concept of speech in our people. You will be having another picture. So the hair is here. So the picture is here, and you can see that a lady is showing a card to a child. So if अगर मैं इसको अपने सिनेरियो में लूँ तो a teacher is showing a card to her student, and the student is trying to produce the sound of the letter of English alphabets. So वो बच्ची जो है वो उस साउंड को प्रोड्यूस कर रही है जो उस लेटर की है, और टीचर को अगर देखा जाए तो शी इज़ ट्राइंग टू हेल्प द चाइल्ड हाउ टू प्रोड्यूस दैट साउंड. सो बेसिकली अभी हम आगे चल कर देखते हैं कि ये किस चीज़ की बात हो रही है. Yes, here the topic speech is. Speech is the communication of meanings by means of symbols which usually take the form of spoken or written words. तो हम एक दूसरे से जो बात करते हैं वो स्पीच होती है. ठीक है, हमारी बात स्पीच होती है. बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज और स्पीच के बारे में, लेकिन इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपने इसको गड़बड़ नहीं कर देना है. लैंग्वेज की डेफिनेशन मैं आपको अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, सेकंड वीडियो में बता चुकी हूँ, उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखना होगी. सो बेसिकली जो पिक्चर हम डिस्कस कर रहे थे वो सेकंड पिक्चर थी जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं. तो लैंग्वेज और स्पीच में जो डिफरेंस हमने देखा, लैंग्वेज होते हैं वो वर्ड जिनके थ्रू आप अपनी ज़ुबान के ज़रिए अपने जो भी आपकी फीलिंग्स हैं या आपकी राय है या आपके माइंड में जो कुछ भी होता है, आप अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करके उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं. लेकिन उस ज़ुबान को किस तरह से बनाया जाता है, वो ज़ुबान किन किन चीज़ों का मुरक्कब होती है, किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उसमें कुछ लेटर्स आ जाते हैं और उनको अपने मुंह से अदा करने के लिए हमें कुछ अल्लाह ताला ने नेमतें अता कर रखी हैं. अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर था, ह्यूमन थ्रॉट का और माउथ का स्ट्रक्चर था जिसके बारे में बात की गई थी पिक्चर में. ठीक है, तो उसको मैं ज़्यादा साइंटिफिकली डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं हमें अल्फाज को अदा करने के लिए, हरूफ को अदा करने के लिए, उनकी आवाज़ को निकालने के लिए. इसी तरह इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माउथ जो है वो ये पॉजेज़ बनाता है, ये फॉर्म्स बनाता है. इस तरह की कुछ हमारी लुक होती है जब हम इन अल्फ़ाबेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. AEI को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा माउथ ऐसे फेस हमारा होगा, ऐसे लुक होगी हमारे लिप्स की. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिएगा. जब हमने अपने मास्टर्स में पढ़ा था तो हमारे टीचर्स ने बाकायदा मिरर्स हमारे सामने रख कर हमें साउंड्स को प्रोड्यूस करना बताया था
تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے لپس جو ہیں وہ کسی الفابیٹ کسی لیٹر کو پروڈیوس کرتے ہوئے کس طرح کی اس کا جو ہے وہ لک آتی ہے. تو اٹ واز ریئلی ویری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی فار اس. آرٹیکولیشن کی بات کرتے ہیں. اسپیچ کو پروڈیوس کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آرٹیکولیشن ہوتی ہے. آرٹیکولیشن کی ڈیفینیشن میں ابھی ریڈ نہیں کر رہی آپ کے لیے, اس کو میں ایزی ورڈس میں بتا دیتی ہوں کہ کچھ بونس کو, کچھ جوائنٹس کو مل کر ہیلپ کرنا ہوتی ہے آواز کو گلے سے اور ہمارے لنگس سے ہو کر, ہمارے پھیپھڑوں سے ہو کر آواز جو ہے ہمارے گلے سے گزرتی ہے. گلے سے گزرتے ہوئے ہمارے ہونٹوں کے ذریعے سے ہم اس کو باہر نکالتے ہیں اور پھر اس طرح سے الفاظ جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں. اور صرف اسپیچ کے لیے آرٹیکولیشن کی یہ جو جوائنٹس اللہ نے بنا دی ہیں, جاز بنا دی ہیں, ٹیتھ بنا دیے ہیں, ہمارا تھروٹ ہے, تھروٹ کے اندر بہت سارے فنکشنز اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں. تو صرف انہی کی نہیں, ناک بھی ہمیں آواز کو پروڈیوس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. جس طرح بہت سارے سنگرز کو آپ نے سنا ہوگا جو کہ ناک سے گاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسکلی وہ اپنی نوز کے تھرو اس کو, اور پھر وائس آ جاتی ہے. یہ پکچر جو تھی یہ وائس کے بارے میں ہے کہ وائس جو ہے وہ بھی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے آواز کو, الفاظ کو نکالنے میں. تو اگر ہماری آواز ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح سے اپنی بات جو ہے, الفاظ بھی ہمارے پاس ہیں لیکن آواز نہیں ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے. اسی لیے اسپیچ تھیراپیز کروائی جاتی ہیں بچوں کو. بہت سارے بچے جو لیٹ بولنا شروع کرتے ہیں ان کو اسپیچ تھیراپیز بھی کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ بولنا شروع کریں اور آواز کو نکالنا شروع کریں. اور اسی طرح ابھی یہ جو پکچر آپ کے سامنے ہے یہ فلوئنسی کے بارے میں ہے کہ آپ جتنا زیادہ آپ کا برین جلدی کام کرے گا اتنا جلدی آپ فلوئنٹ ہوں گے. تو آرٹیکولیشن, وائس اور فلوئنسی جو ہے وہ اسپیچ میں بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. تھینک یو فار ٹوڈیز ویڈیو. بیل آئکن ضرور پریس